we remain united as we are one in baptism, one in the spirit, one in faith. And Lord, we ask today, lead this meeting, guide us, be with us, be present us, and fill us with your anointing. Fill us with the word of God. Fill us with the divine revelation of the word of God. And very special, Lord, bless our families, bless all of us. And as we are going to have the meeting on Christian Unity meeting on 14th of November, 14th of February next month, Lord, let let your anointing come upon that place. Let your anointing come upon that meeting. Even today onwards, Lord, touch each one of the people present who are going to be invited for that meeting. Touch each one of the present people, all the guests whom we are going to approach to come whom we are going to invite for the meetings. Lord, we pray, touch them even before we ask them to come for the meeting. And let all the invitees, let whatever we have decided to invite the people, invite the guests, let all the invitees say yes for that meeting, and let that meeting be a truly united Christians and Jewish community meeting, Lord Jesus. And as we have planned for that meetings, let it go according to your anointing, Lord Jesus. Yes. Today, especially as we sit down here, as we have come together, Lord, bless this meeting and bless each one of us. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Amen and amen and amen. Yeah, thank you, Father Robin, for the beautiful, wonderful prayer. And we are very blessed, to have Pastor Wilson and Sister Maria to, preach the word today and, give us the revelation knowledge about God. And regularly before we start the meeting, we also pray for the Shalom of Jerusalem, Yes. Israel and India. So I just want to check if somebody of our... okay, I think I will only take the prayer for Shalom of Jerusalem, Israel and India. So let us pray for the Shalom of Jerusalem, Israel and India. Father, Heavenly Abba, Father, thank you for your love that you have given all of us, O Master. For your word says, John 3:16, for God loved the world so much that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have eternal life. And Father, we just want to thank you, Father, for your that great love, oh Father, that even to the point of, sacrificing your Son, oh Father, that you sent him on this earth and he was given for us, oh Master. Oh Father, thank you. Father, we pray for your love and joy and peace in each and every one of our lives. And Father, especially upholding Jerusalem, which is a very, very important center and important city, oh Father. We pray especially all of us Christians united together, Father, from different churches, denominations, groups. Father, we come together and we pray especially for the Shalom of Jerusalem, oh Father. Because, Father, it is such an important melting point there, oh Father. And so many, these three religions are always, clashing there, Father, in Jerusalem, oh Father. So we pray, Father, that let your shalom be upon Jerusalem, let your peace be upon Jerusalem. And Father, we pray for Israel in a very special way, that you bless Israel, oh Father. Bless the people of Israel, oh Father. Let your hedge of protection be around them, and you safeguard Israel from all the enemies, oh Father. And Father, we also pray for our special great country, oh Father, India, oh Father, which has always been a friend of Israel. We pray for India in a very special way. Protect us from all our enemies, oh Father. Protect this land. And we pray that, you give a special blessing upon this country, oh Father. Father, we pray that let your kingdom come and let your will be done in the land of Israel and India, oh Father. Father, we thank you for this time. Thank you for each and everyone present here for this meeting, to pray for the Shalom of Jerusalem, Israel, India, oh Father. We praise you. We give you glory. We ask you this prayer in the mighty name of your Son, our Lord and King, Yeshua Mashiach, Christ Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen, brother. Amen. 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 So, brother, you now you are here. Thank you. Thank you.
We prayed for Jerusalem. Father Robin did the opening prayer. Then I prayed for Jerusalem, Israel, and India. Yes, brother. And we have, Pastor Wilson and his wife, Maria. Maria. Maria, yeah. Already here. Yes, yes. And then few will be joining. I think more will join us. Yeah. And today we have Sanzia, handling the IT for us. He's going to do the reading. Yeah, and then we have 5 to 10 minutes of admonishment for Father Robin. So take over, brother. Thank you. God bless. Yeah, I think Father Robin can take the time now, since more people are joining. Yeah, Father, can you take over? Can you pray for the peace of Jerusalem? He has prayed for. We have prayed for the. already. Yeah. Now he will take a 5 minutes, I think, admonishment. No, he wanted to talk. Yeah, let him take. Yeah. Yes. Thank you for the upcoming meeting and all. Thank you. I will speak, no? It's 14th February, United for Jerusalem. It's a very, very important meeting because the meeting is between the Christians, all Christians together, brothers, sisters, and with our Jewish brothers. Jewish brothers, when we say Jewish, for us, it is not the country. It's on a spiritual level. Our Jesus, the Lord, he was from that land. He was a Jewish. And when we say, just like somebody says, I'm a Goan. And when if somebody other person meets him, I am also Goan. He says, Mariol, sorry, you bhau means my Goan. When Indians go abroad, whichever state they are, if they meet once I met one person in Boston airport, and that fellow was speaking Marathi. Immediately I felt, you're speaking Marathi, that means you're from Maharashtra. I did not know him. I don't know which religion he belongs to, whatever. But only when I heard him, that also that young man's parents were speaking Marathi. I felt so nice. Somebody speaking Marathi in Boston. Okay, so we feel one. We don't have to know the person who is it. In the same way, when we talk about Jewish people, Jewish brothers and sisters, when you talk about Christian unity, first of all, Christian unity in India, I always say, in India, maybe there has been some mistake earlier. Maybe as we are becoming mature in our faith, in India, Christian unity is very, very important. In fact, I always say, Christian disunity is very, very meaningless. There are two reasons. First reason is, in India, the majority of the people in India, the Christianity in India is just in minority, just a handful. They say 2%, they say 3%, they say 5%, whatever it is, but we are in minority. And majority of the people in India, they don't know Jesus, they don't know the gospel, and they don't know what Christianity is. Actually, they don't know. They look at us, Christian schools are there, Christian hospitals are there, they know fathers, they know sisters, but actually they don't know about Jesus. They have not heard about Jesus. Majority I'm saying. Majority means when we talk about 130 crore, or now today maybe more than that, out of 130 crore, the majority of the people in India, they have not heard about the gospel. They have not heard about Jesus. They have not heard about Christianity. They know the Christian schools. They know the pastors. They know the fathers. They know the people, but they don't know. And when you talk about majority don't know about Christianity, about Jesus, about the Bible, Word of God, then the Christian small community, small minority, if it is divided into many, many congregations. That day one pastor told me, we are 6,000 congregations, 6,000 denominations in India. 6,000 denominations. It's beautiful. 100%. Each denomination is there is no problem if there are different denominations. No problem with how many denominations are there. No problem. But the thing is that we should be united. As Ephesians chapter 4, verse 5, it says, one Lord, one baptism, and one faith.
Even 6,000 denominations are there, but we serve one Lord, correct? One baptism, correct? And one gospel, one faith. We have one faith. We have faith in Jesus. Then on that basis, we should be together, standing together as one community, so that when the 95% of the people don't know about the Christianity, no problem. But they say, okay, Christian community. They say, okay, Christian. When we are together, we're witnessing what? As a Christian community, we're witnessing to the other part of to the other brothers and sisters. Then, my dear brothers and sisters, so it's very, very important it is that today in India, as a Christian community, we should be united. Why in India? I'm saying purposely why I'm saying in India. In Western countries, European countries, the Christians are in majority. Though they may not be going to the church and all, no problem. But they are in majority, and they are the education also more there. Okay, and if even they may not go to the church, they may not be practicing Christians, majority of them, but they know about Jesus. They know about the gospel. They know about the Christianity, and they know about the different denominations. So the Europe and America denominations may not make sense, but at least they understand it. In India, the majority cannot understand only. Even I don't understand what how many denominations I can count only few only for on hand. But in that day, Brother Thomas, that day you sent me the list of denominations. Once you sent that list, if you find out the list on the internet, the list goes on and on and on and on. But still, we have no problems with the denominations. There can be many, many denominations. But what is the fact that we should be united? And Brother Thomas, whatever the mission we have started, even this meeting itself, we are all brothers and sisters together. Yes, there is no question about anything. Amen. Brother Wilson, Pastor Wilson, most of the time when we are gathering together, all of us, we feel so homely. Na? Even I look forward, Brother Thomas, when our Zoom meeting is there, when our Brother Mario, when our prayer meeting is there, because that is the time we can see one another. That is time we can hear one another. That is time we can share something. If I want to say something, instead of saying on the WhatsApp, instead of saying on the Facebook, or instead of saying on the phone, here we are able to see one another. Correct? Well, I'm clear. Sound is coming. Something. Yes, perfect. Yeah, we are able to see one another. So, but so what is important? The important point is that we don't see here as we are different denominations. What we see here is that as one community, united for Jerusalem community. So, my dear brothers and sisters, this 14th February meeting is very, very important. In fact, we start praying from today onwards. Lord, bless that meeting. This time we are gathering for 75 people or around 100 maybe altogether. But next time when we'll have 1,000 people. Next time, coming years, we'll have 5,000 people, and coming years, we'll have 10,000 people, Christian community gathering together for prayer, praise, and worship as one community. And that's why this 14th February is the meeting is very, very important, and we pray for that. And secondly, the Jewish community, as we said, as I was giving the example of the suppose say when we meet some Goans will feel when we meet somebody abroad. Indian person, we don't say which country, which state he belongs to. We say, you are Indian, you are my brother. Okay. On that basis, Jewish community is very, very important for us because the root of Jesus is from Jerusalem. The land of Jesus was Jerusalem. And that is the reason the whole world, all want to go to Jerusalem. All want to go to Israel. Why? When I was traveling in Israel, when I was visiting Israel, only one prayer is in my mind, that today I am able to walk on the land where my Jesus walked. Today I am able to see the place where my Jesus walked. Today I am able to sit in the sea, sit in the boat and go around the Sea of Galilee where Jesus preached the word of God. What a powerful anointing it is.
Pray with where Jesus had the Last Supper, where Jesus was born, the Bethlehem Chapel, where Jesus. It is a land of Jesus. It is a land where just like how you say we are born in India, we are born in Bombay, we are born in the same way Jesus is born in that Jewish community in Israel, and so for us as though people who believe in Jesus, the Jewish community is very, very important. Even the land of Jerusalem is very, very important, and that is the reason when as we are gathering together on 14th of February, that meeting is going to be full of anointing. That meeting is going to be very, 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 very beautiful meeting, because all of us meeting together, praying together, sharing our experiences, sharing our faith, and very, very important thing. One more important thing I want to say, that I go a little beyond that. That as a Christian community, when I talk about Jesus, when I feel about Jesus, Jesus is not only for Christian community, but Jesus is for the whole humanity. I always say that that is my famous sentence. Gospel is not a religion for a small minority. Gospel is not a religion for a small community. Gospel is a spirituality for the whole humanity. And when I say this, John 3, verse 16, I always say, quote this one, that God so loved the Christians. Correct, Pastor Wilson? John chapter 3, verse 16, God so loved the world. Say, somebody say. World. God so loved the world. Not Christians, not one denomination, not one community. Not Catholic, not Catholics. No, I'm not saying any denomination, not Catholics or nobody. God did not love any God did not love any religion. God loved the world. That's why I say Jesus never came for any religion. Jesus came to establish the kingdom of God. Kingdom of God means the people, brothers and sisters, all people. Then in the kingdom of God, who comes in the kingdom of God? Everybody. When you talk about kingdom, when you talk gospel as a spirituality, that means Jesus came to establish the kingdom of God on earth. Kingdom of God means all people, all brothers and sisters, all children of God staying together with love, joy, peace, happiness, kindness, goodness, gentleness, humility, sharing, caring, loving one another, forgiving one another, equality, fraternity, justice, freedom. That's where the kingdom of God. Actually, Jesus was hurrying up in his 3 years ministry. Jesus says, let's go. He never repeated the gospel. He used to say, let's go from place to place, place to place. He sent the disciples away to preach the gospel, but he told them, go from place to place, go from one place to another place, preaching the gospel, because at the end of the day, gospel should reach everybody. That's why I like that gospel. I like that 2 Philippians chapter 2, verse 9 to 11. The last verse is said, at the end of the world, at the end, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the Lord. Brother Thomas, Brother Mario, I 100% believe that verse. I 100% believe that verse, because at the end of end time, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is. But for that, you and me have to preach the gospel. You and me. That's why the word of God is said. Mark chapter 16, verse 15. Jesus said, "Go and preach this good news to all people all over the world." There he doesn't use the word "go and preach this good news to the Christians." Today, Christians are more and more, every time Christians are listening to the word of God. We also are preaching the gospel to the Christian community. And what is happening? Christians are listening to the word of God again and again, again and again. Then the problem it comes, as the Psalm number 42, the word of God says,
Mario, let me tell you, when I should finish. As Psalm number 42, verse 1 and 2 says, as the deer pants for stream of water. That means what? The word of God should be sown to the people who are thirsty for the word of God. The word of God should be sown in a fertile soil so that the crop will come 100%, 60%, 30%. My dear brothers and sisters, it is a very, very big responsibility for you and me today that gospel should reach to all people, majority of the people. And how people who, you and me are blessed because we know Jesus. You and me are blessed, anointed because we know the gospel. You and me are blessed because somebody planted that gospel in our heart and mind. And but then today it is our responsibility. It is a big burden on us that this gospel message should reach to other people. There is one point is there. We don't have to make everybody Christian. That's why the conversion problem comes. Listen, we are not here to convert anybody. We are not here to convert anybody into religion. We are here to preach the gospel spirituality. Love one another. Jesus said, love one another. Jesus said, forgive one another. Where is the religion? Jesus said, be kind to one another. Jesus said, give to somebody, give to some. That is the reason the Christian community all over the world is the one community which is they express through the giving. They give to the people. They share their food with the people. That's why, my dear brothers and sisters, as we have gathered together here, let's pray for the Christian unit meeting on 14th of February. Lord, bless that meeting and let all the invitees come for the meeting from all the denominations, and let there be a really Christian unity meeting on that day. Thank you very much. Not clear. Yeah, brother, unmute. Brother Mario, unmute. Yes, your mic. unmute, done. Yeah, Pastor Wilson, we have taken some time from you. Yeah, are you there? Can you hear us? Yes. Yeah, I can hear. Yeah, so we can go a little bit around 9:05. So Yeah. that No, I know. I'll finish before the 9 o'clock. I'll finish that. Yeah, please go Nine- ahead. nine o'clock. We are very happy to see you once again, Gawale Bhai, and Sister Maria also. Sister Maria also. Yeah, you have you have told us many good things, but you have not told us how to keep on smiling. So when we meet privately, you will have to share the secret. Yeah, please go ahead, brother. Please go ahead. We wish you a great session. Yes. Yeah, Amen. thank you everyone. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ I want to thank God क्योंकि प्रभु ने ऐसे हम लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को अलग अलग रीति से प्रभु इन दिनों हम लोग को बांध कर रख रहा है, because God has brought us together, and in these days He's connecting us and He's bringing us together. और हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लोग आएंगे और अब्राहम के साथ बैठेंगे। मतलब परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग चीजों से आएंगे और एक साथ रहने वाले हैं। So even as we read in the Bible, it is mentioned that people from east, west, north, south will come and sit at the table with Abraham. So we also see that in the same manner, people are coming from different directions to hear the word of God. इसके लिए परमेश्वर हम लोगों को इकट्ठा लेके आ रहा है। And so God is bringing all of us together. इसके लिए परमेश्वर को हम लोग को आदर कर प्रभु का प्रार्थना करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम एक देह बनकर रह जाएं। And therefore we continuously need to pray that God should help us to be together like one body in Christ. इसके लिए जब भी प्रभु आएगा तो ये लेके नहीं आएगा किसी को चर्च के नाम के लिए नहीं आएगा, वो अपने कलीसिया के उठाने के लिए आ रहा है, एक प्रभु के देह के लिए आ रहा है और इसके लिए वो देह उठाई जाएगी। And so we see when Jesus will return to take his bride, his church, he is not coming for the name or a certain denomination, but he's coming for his own church, for the bride. और इसके लिए आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो मैं 5 चीजों से मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट से प्रभु ने चुन लिया उन लोगों को, लेकिन वो सारे लोग फेलियर हो गए। इसी वही चीजें आज हम लोगों को परमेश्वर ने वो अधिकार हम लोगों को दिया है। So today I'm going to share with you this topic about the 5 different people whom God anointed and how God used them. But we see failures in their life, but we will learn through them.
इसके लिए हम देखते हैं जब भी बाइबल जब भी हम खोलते हैं तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चीज है वो है anointing. And when we open our Bibles and read about the Word of God, in that we get to see the topic about anointing. हेजिकल 28 में लिखा गया है कि जो स्वर्गदूत था उसको 9 पत्थरों से बनाया गया था और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था. And we read in the book of Ezekiel chapter 28 that God had created this angel and he was the Lucifer. He was created with 9 different stones and he was made very beautiful. इसके लिए आज संसार के लोग 9 रत्न डाल के घूम रहे हैं, लेकिन वो 9 रत्न उन लोगों के लिए सफलता में नहीं लाएंगे. लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने आपको 9 फल और 9 वरदान दिए, उसके द्वारा आप उसको हासिल कर सकते. So we see that in the world the people wear different 9 gemstones and they wear it for their success and prosperity and for their joy and various other reasons, but that will not bring them what they are seeking. But today God has given us the 9 gifts of the Holy Spirit and 9 fruits of the Holy Spirit through which we can overcome. इसके लिए परमेश्वर ने जो पहला अभिषेक व्यक्ति को स्वर्ग से उसको निकाल कर फेंक दिया, मतलब परमेश्वर वो वहां से उठाकर यहाँ पे नीचे डाला है, लेकिन परमेश्वर ने और एक प्लान किया नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए. So even when the anointed one, Lucifer was the anointed one to worship God, but when we see he rebelled and when he came against God, God threw him down, and then we see that after he's thrown down, God wants to take people here from earth to heaven. इसके लिए प्रभु वचन कहता है कि पिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधक को, क्योंकि आज हम लोग जो शैतान ने जो एक टाइम पे वो आराधना कर रहा था, आज वही चीज परमेश्वर ने हम लोगों को हकदार दिया है उसकी आराधना करने. So we read in the Word of God that Father is seeking for true worshippers, and we see even when he's thrown down, God is seeking who are the true worshippers, and therefore he will choose us from here to worship him in heaven. आइए हम स्लाइड्स को देखेंगे इस समय पे. So let us see some of the slides. I'll share the screen with you. The access for the slide. Can you please give us the access? Yeah, to share? Sanjia, can you give access to the? Yeah, Sanjia. Yeah, Yeah, can you give access to the slides, please? yeah, I gave. Yeah, it's done. Thank you. Thank you, sister. And hope it's recording, huh? Yeah, Thanks. it is. Thank you. Were you able to see the screen? Yes, sister. Yes, sister. Yes, sister. थैंक यू. अभी यहाँ पर देखते हैं जो अनॉइंटिंग है वो तेल से होता है. And here we see this picture about the anointing. Anointing is done with the oil. और आप देखते हैं गुड सैमरिटन के बारे में. When we refer about the parable of the Good Samaritan, जब भी वो दिखता है तो वहां पर एक पड़ा हुआ आदमी दिखता है, उसको आधा मरा वहां पर. so when the Good Samaritan was passing by, he saw a man who was fallen down and he was half dead, kind of a person lying down on the road. और वो 2 चीजें डालता है उसके ऊपर. And we see the Good Samaritan poured out 2 different things over him. वो एक दाखरस डालता है और तेल डालता है. So it is mentioned that he poured the wine and the oil. दाखरस रिप्रेजेंट करता है लहू प्रभु का, And the wine represents the blood of Jesus. और तेल रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर का आत्मा. And the oil represents the Spirit of God. लेकिन यहाँ पर आज कलीसिया ये दोनों चीज का इस्तेमाल नहीं करते. But nowadays we see the churches are not using these 2 things. देखिए हम देखते हैं दाखरस का हम लोग अच्छा से इस्तेमाल करते हैं लहू के लिए, क्योंकि हमें क्षमा चाहिए. We use the blood of Jesus to forgive us for the forgiveness of our sins. लेकिन हम तेल का इस्तेमाल नहीं करते. But then we do not use the oil. मतलब आत्मा का हम इस्तेमाल नहीं We करते. do not use the Holy Spirit. इसके लिए हम लोग को देखते हैं कि बहुत लोगों के तो पाप तो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो जीवन है वो तृप्त नहीं होता. So we see many people's sins are forgiven, but at the same time, when they do not have the Holy Spirit, their life is not receiving that satisfaction, or they are not satisfied in the Lord. इसके लिए क्योंकि उन लोगों को वो तेल की जरूरत है. Because they have the need of oil. इसके लिए परमेश्वर कहता है उसने दाखरस और तेल उंडेला. And therefore we see the Bible mentions that the Good Samaritan poured
the wine and the oil on the wounds of that person. आज सभी जन आते हैं कलीसिया में, वो सिर्फ ये आशा करके प्रभु हमें उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। So today, whenever a person comes to church or to God, they plead the blood of Jesus for the forgiveness of their sins. उन्हें क्षमा मिलती है, They get the forgiveness, लेकिन उन लोगों को वो तेल के लिए उतनी आशा नहीं करते। but they do not seek or desire the oil as much as they plead for the blood of Jesus. और हम यहाँ पर देखते हैं चित्र में जो मूसा था और किस तरह से एरोन के ऊपर वो तेल से अभिषेक करता है। Here in the second slide, we are able to see how Moses anointed Aaron as a high priest with the oil. लेकिन हम देखते हैं कि तेल परमेश्वर ने सर के ऊपर क्यों डाला गया, बोला गया। And why did God command that the oil should be poured on the head? इसके लिए हम देखते हैं वचन में प्रभु कहता है मैं आपको सर बनाऊंगा लेकिन आपको पूंछ नहीं बनाऊंगा। Because the word of God mentions that he will always make you the head and not the tail. तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी आपको तेल जब भी आपके सर के ऊपर डाला जाता है कि आप ऊपर की तरफ जाने के लिए। So when you are anointed with oil, it is for you to move up. इसके लिए परमेश्वर जब भी हम देखते हैं बाइबल में जो भी होने दो, चाहे दाऊद होने जो, चाहे वो हारून होने दो, कोई किसी के ऊपर जब ये तेल डाला गया वो लोग ऊपर की दिशा में चले गए। So we see in the Bible, whoever was anointed, be it David or be it anybody else, when they were anointed with oil, they always moved upwards. इसके लिए आज हम लोगों को परमेश्वर ने उसके हर्षित तेल से हमको अभिषेक किया है कि हम ऊपर की तरफ जाने के And लिए। therefore today God has anointed us with his oil of gladness so that we may move up. इसके लिए आज परमेश्वर आप ही सभी लोगों को वो परमेश्वर का तेल से आपको अभिषेक किया है। And therefore today God has anointed each one of you with his anointing oil, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाने के so लिए। that you all can move up. हालेलुया। Hallelujah. आज हम लोग शेपर्ड के बारे में देखेंगे। पहला चीज है First thing we will look about the shepherd, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी लोगों को शेपर्ड करके बुलाया गया है। because we see God has called each one of us to be like a shepherd. इसके लिए बाइबल कहती है जब मुख्य चरवा आएगा तभी हम भी जो चरवा लोग हैं उसके साथ मिलने को So the चाहेंगे। Bible mentions when the chief shepherd will appear, we also, the other shepherds, will appear before him. इसके लिए बाइबल में हम पहला देखते हैं, अब देखो एबल से लेके हम देखेंगे मूसा तक हम लोग वहां पे चरवाओं के बारे में बात कर रहा है So in the परमेश्वर। Bible, when we refer right from the beginning, that is right from Adam to Moses, we can see or read more about shepherds. नोआ चरवा था, Noah was a shepherd. एबल चरवा था, Abel was a shepherd. अब्राहम इसहाक याकूब उसके बच्चे चरवा थे, Abraham, Isaac, Jacob, and their descendants, they were shepherds. मूसा चरवा था। Moses was also a shepherd. मतलब जो पहला चुनाव जब होता है जो परमेश्वर चरवा लोगों को चुनता So है। the first thing that God chooses is a shepherd. इसके लिए परमेश्वर ने जब शुरुआत भी दिया पतरस के हाथ में तो कहा कि पतरस मेरे भेड़ को संभाल, मेरे भेड़ को चला। इसके लिए परमेश्वर जो पहला आपका कदम रहता है आपके लाइफ के अंदर वो चरवा की देखने में रहता So है। even when it began with Peter, Jesus told Peter that feed my sheep, feed the lambs, and therefore whatever he begins with is with being a shepherd. इसके लिए चरवा क्या करता है, दूसरों भेड़ों को सही मार्ग दिखाता है। And what does a shepherd do? A shepherd leads the other sheep or other shepherds in the right direction. इसके लिए जब भी हम सुसमाचार देते हैं हम किसी न किसी को लीड करते हैं प्रभु के क्रूस की तरफ और क्रूस की तरफ लेके आते हैं। So when we anybody of us, we share the gospel, we are like shepherds leading the people towards the cross or towards Jesus. हालेलुया। तो Hallelujah. इसके लिए हम देखते हैं जब भी प्रभु यीशु का जन्म भी हो गया So even when Jesus was born, तभी उसको पहले देखने के लिए कौन गए थे? who had come to see Jesus? उसको डिक्लेयर करने के लिए कि वो चरवा के उसके जो तबेले के अंदर तभी चरवा लोगों को चुना गया So था। who had gone to that stable where Jesus was born? It were the shepherds, क्योंकि शेपर्ड ही जानते थे कि पहलौठा कौन है। because only the shepherds can make out, or only they can realize or recognize the firstborn. द फर्स्ट जो पहलौठा जब भी अभी जो परमेश्वर ने कहा था इस्राएल लोगों को आपका हर एक पहलौठा मेरे घर के अंदर लाना है। And so when God had commanded in the Old Testament to Moses and the people of Israel, he had told them that you have to get the firstborn sheep, firstborn lamb from the sheep or goats into my house. इसका मतलब जो भी पहलौठा होगा वो प्रभु को देना बहुत जरूरी So था। only the firstborn was supposed to be offered to God. यीशु मसीह पहलौठा था।
So Jesus is also the firstborn. इसके लिए वो डिक्लेयर करने के लिए गए थे। And so therefore the shepherds went when Jesus was born, the shepherds had gone to see him to declare that yes, Jesus was the firstborn. मतलब वो मरने वाला है कलवरी क्रूस पे। And that he is the lamb who's going to die on the cross. इसलिए हम दो जगह पे देखते हैं यीशु मसीह को सफेद कपड़े से बांध कर रखा है। And therefore we get to see in two different places how Jesus is wrapped in the white linen. हम जन्म के टाइम पे At the time of his birth in the manger, और मरने के बाद। and also at the time of his death when he was placed in the tomb. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो डिक्लेरेशन है वो पहला चरवाह से आता है। So first thing, the declaration which comes or the confirmation that comes is from the shepherds itself. इसके लिए हम देखते हैं जब भी हम देखते हैं अब्राहम होने तो इसहाक होने तो वहां पर वो जितने भी लोग थे चरवाह थे और चरवाह लोगों ने परमेश्वर की सेवा की। And so we see all the shepherds, that is Abraham, Isaac or Jacob, all of these served God. और इसके लिए उसके बाद हम देखते हैं मूसा एक चरवाह था And then we see Moses was also a shepherd. और परमेश्वर ने उसको चुनाव किया। And God had chosen him. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के द्वारा याजक लोग आ गए हैं। And therefore we get to see that through Moses, the priest came into the presence of God. हम देखते हैं जैसा मूसा एक चरवाह होने के बाद उसने आशीष किसको किया? याजक लोगों को। And Moses being a shepherd, whom did he anoint? He anointed the priest. और इसके लिए आज हम देखते हैं जो दूसरा दर्जा है हम सभी लोगों का वो है याजक। And therefore the second level or our place is about the priest in our lives. इसके लिए आज हम लोग जितने भी लोग हैं हम याजक ही लोग हैं। And therefore as God's word mentions that we all are the royal priesthood. जब लाल समुद्र का पार करने से पहले वो बाइबल कहती है पहला कोरिन्थियन अध्याय 10 में वो लोग ने बादल में और पानी में बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा लिया। So in 1 Corinthians chapter 10 we get to see that the Bible mentions that the people of Israel they were baptized into the baptism of Moses in the Red Sea. जॉन द बैप्टिस्ट ने पहला बपतिस्मा नहीं दिया प्रियो। So it was not the John the Baptist who baptized the people. It is not the first baptism. बहुत लोग उसके कंफ्यूजन खाते कि जो बपतिस्मा है वो नए करार से होता है करके। And most of the people are confused. They're not aware. They think that the baptism has begun in the New Testament when John the Baptist was baptizing. नहीं प्रियो। No, beloved. पहला से ये बपतिस्मा जो है वो मूसा के टाइम से उसके पहले हम देखते हैं नोआ का एक टाइम था वो भी एक बपतिस्मा के समय ऐसा। No, but we see baptism in the Old Testament from the time of Moses. इसके लिए यहाँ पर हम देखने को मिलता है एक याजक को बुलाया गया। And therefore here we get to see a priest is called. और इसके लिए हम देखते हैं आज हम सभी लोगों को परमेश्वर ने एक याजक करके बुलाया गया है। And today we get to see God has called us to be priests for him. इसके लिए हम देखते हैं मूसा ने अभिषेक जो अपना जो चरवा का अभिषेक जो है अभी एक याजक के अंदर जा रहा है। And so we see the anointing that is there upon Moses the shepherd is going into the priest that is Aaron. और परमेश्वर कहता है अभी याजक लोग यहाँ से मेरी सेवा करेंगे। And then God is saying that now here on the priests are also going to worship and serve me. और इसकी देखते हैं याजक लोगों ने तो शुरुआत तो अच्छी की लेकिन उन लोग कहाँ ना कहाँ फेलियर आए हैं उन लोगों So की लाइफ even में। when the priests began to worship God and they started serving God, they also had some failures in their life. इसके लिए हम देखते हैं वहां पर कोई भी सफलता को नहीं देख पाए वो लोग। And then they did not see a success or growth in them. इसके लिए आज हम लोग देखना है कि प्रभु ने तुम लोगों को कहता है तुम एक याजक की प्रजा हो और मैंने तुम लोगों को याजक करके बुलाया गया है। And here we need to go into the word of God and see that God is calling us as the royal priesthood in a holy nation. और इसके लिए आज मैं और आप हम सभी जन हम याजक हैं। And today you and me, we are priests before God. क्योंकि हम सदा के लिए याजक की उस लोग रहने वाले हैं। Because forever we are going to be his in a holy nation and a royal priesthood. हम लोग का नाम क्रिश्चियन करके रहने वाला नहीं है। We are no longer going to be called as Christians. भी हम लोग लेकिन याजक की प्रजा करके कहलाया But one thing is that we will be called and known as the royal priesthood. मैं याजक हूँ। I am a priest. आप लोग याजक हो। You are a priest. इसके लिए आप पवित्र स्थान में जा सकते And हो। that's why you are able to enter into the presence of God. हम सभी लोग उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। And that's why we all are able to go into the holier place. इसके लिए आज हम लोगों को विश्वास करना है कि परमेश्वर हम लोगों को याजक करके बुलाया गया है। And therefore we need to believe that God has called us to be a priest. देखो हम यहाँ पर देखते हैं जब चरवा लोगों ने डिक्लेयर करने के बाद उचरनी में And when the shepherds confirmed that Jesus was the lamb in the manger, उसके बाद किसने डिक्लेयर किया?
who was the second person to confirm that Jesus was the firstborn? इसके लिए हमने उसके बाद किसने डिक्लेरेशन में किया? Who was the second person to declare about Jesus? वो है शिमोन। The second person was Simeon. देखो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा चरवा लोग पहले और बाद में यहाँ पर देखते हैं याजक आए हैं। तो उसी तरह से यीशु मसीह को भी डिक्लेयर करते टाइम पे एक लाइन है जो उसके बाद हम चरवा लोगों ने बात उसको एक्नॉलेज करने के बाद यहाँ पर शिमोन उसको कहता है कि ये जो पर मैंने उद्धार को देख लिया है। So as in the Old Testament, we saw first the shepherd and then the priest. In the same manner, when Jesus was acknowledged first by the shepherds and then secondly by the priest, that is Simeon. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ जो आपका जो सेकेंड अनॉइंटिंग है, पहला आपका चरवा का अनॉइंटिंग होता है और दूसरा आपको शेपर्ड का अनॉइंटिंग, सॉरी चरवा याजक का अनॉइंटिंग रहता है। So therefore, even when we get the anointing at that level, first level is the anointing that is given to a shepherd, and then the second one is the priestly anointing. इसके लिए आज मैं और आप हम याजकी लोग हैं। And therefore today you and me, we are a royal priesthood. इसके लिए जब याजकपन जब हम लोगों के अंदर आता है तभी हम लोगों के सब चीज बदल जाते हैं प्रियो। And therefore when the priestlyhood enters into our life and we completely change. एक्सोडस अध्याय 19 वचन 6 कहता है कि प्रभु मूसा को कहता है ये पूरा जो लोग आए हैं ये पूरे लोग याजक की प्रजा है मेरी। In Exodus chapter 19 verse 6, God told Moses that the people all who came out of the land of Egypt, that is the people of Israel, they all were called to be the priest of God. लेकिन वहां पर उनकी गलती की वजह से उन लोगों को लेवी लोगों को ही गोत्रों को याजक का काम मिला। But because the entire people of Israel rebelled against God and did various things which did not please God, therefore God chose only the tribe of Levites to be priests unto God. अब यहाँ पे मूसा एक चरवा था। So here we see Moses was a shepherd. उसने आशीष किया किसके ऊपर? एरोन के ऊपर। He anointed Aaron with that oil. हम देखते हैं याजक लोगों का समय आ गया। Then the time of priesthood came into being. और वो लोग राज करने लगे। And then the priest started ruling. लेकिन याजक लोग ही कहाँ ना कहाँ कमजोर गिर गए। But there was some lacking or shortfall in the serving of the priest before God. और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने जजेस लोगों को चुन लिया। So then we see thirdly in the Old Testament, God chose the judges in the to rule and to serve the people of the land of Israel. इसके लिए आज परमेश्वर ने सिर्फ आपको एक चरवा करके बुलाया नहीं, आपको सिर्फ एक याजक करके नहीं बुलाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठकर न्याय करोगे करके कहा। So God has not only called you to be a shepherd and not only called you to be a priest, but at the same time He calls you to be a judge, that is to sit along with Him and to judge in justice and righteousness. इसके लिए परमेश्वर हम लोगों को एक ही तरफ से नहीं रख रहा है, वो हम लोगों को कहता है तुम लोगों को लीड करोगे मेरे राज्य के अंदर, तुम लोग याजक हो, याजक की काम करोगे और साथ ही साथ तुम लोग न्याय भी करोगे। So here we get to see that God has not called us to just do one kind of a work, but He calls us to be a shepherd, to lead His people, and then to priest, to serve before Him and also His people, and thirdly to be a judge as well. इसलिए हम जोशुआ के बाद देखते हैं सारे लोग जजेस आ गए, न्यायी लोग आए, सैमसन होने दो या वहां पर ऊद होने दो, अलग अलग लोग, गिडियन होने दो, ये सारे लोग जितने भी उठे वो न्यायी लोग थे। And therefore we get to see after Joshua died, various judges arose in Israel, like Gideon and then Ehud and different kinds of people who acted as judges in the land of Israel. लेकिन वो लोग भी कहाँ ना कहाँ फेलियर हो गए। But they also failed at some places. और इसके लिए परमेश्वर ने एली तक उसने वो न्याय का चीज रखा दिया। And then we get to see until Eli, we get to see that the judges remained. और हम देखते हैं वहां पर उन लोग ने रूल किया। And then there the judges ruled. और हम देखते हैं एली भी वहां पर राज कर रहा था। And Eli was a judge at that time. और हम देखते हैं उसकी तरह से हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर हम लोग जजेस जो यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं वही अनॉइंटिंग में यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं लोग। And when people reach at this level, that is the anointing which is there upon them like a judge, here many people come to a failure. और इसके लिए हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं वहां पर बहुत सारा फेलियर आ गया। And because in the Bible also we get to see because of their mistakes, the judges also failed in their ruling. इसके लिए आज
मैं और आप, हम सभी जन हम जानते हैं कि परमेश्वर का बुलावा क्या है हम And लोगों today, के। you and me, we all know what is the calling for each one of us from God. इसके लिए बाइबल कहती है कोरिन्थियन में संत लोग उसका न्याय करेंगे लोगों का। And therefore, in the Bible, it is mentioned that the saints are going to judge the people. लेकिन आपको बोलते हैं अगर आप संसार की चीजों को अच्छे से न्याय करोगे, आप उस दिन कैसे न्याय करोगे उन चीजों के लिए। So today, if we are not able to judge in a right manner the things of this world, then how will we be able to judge the spiritual things and the greater things that God has for प्रियो us? हम लोगों का जो बुलावट है वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ढांचा में डाला गया है। So the calling that God has for us has been mentioned, and it is like a mystery in the Old Testament. इसके लिए सारी चीजें जो ये जो उन लोगों का जो कॉलिंग था, उन लोग एक पर्टिकुलर कॉलिंग में थे, लेकिन हम ये पांचों कॉलिंग के अंदर हमको गॉड ने बुलाया। So we see in the Old Testament, people were called for one particular calling and they had to fulfill that. But today, God has appointed us and called us for all these different types of callings in our life. इसके लिए प्रियो आज परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता And है। therefore, today, God wants to speak to your heart. इसको यहाँ पर देखो ध्यान से। And therefore, pay attention carefully. पहले चरवा लोगों ने जाके चरनी पे वहां पे आराधना की, डिक्लेयर किया। So first thing is the shepherds went into the manger and they anointed and they declared, acknowledged Jesus as the firstborn in the manger. और उसके बाद हम देखते हैं शिमोन ने यीशु मसीह को उठाकर डिक्लेयर किया, And then we ये see- है उजाला और ये है ग्लोरी करके। And then we see the secondly, Simeon also acknowledged Jesus and he blessed Jesus and he said that he is the Light. light to the nations and the glory of Israel. हालेलुया। Hallelujah. अभी तीसरा डिक्लेयर कौन कर रहा है? Now the third declaration is coming from whom? जजेस से लोग होना चाहिए। It should be from judges. कि हेरोड राजा जब भी वो लोग ज्ञानी लोग आए, तभी वो लोग बोलने लगे वो बालक कहाँ है, तभी हेरोड राजा ने अपने न्यायी लोगों को, जो शास्त्री लोग थे, उन लोगों को पूछा कि कौन पैदा होने वाला है। So at the time of Jesus' birth, we see King Herod was asking when the wise men came to inquire about the king of Jews who was born, that Herod inquired from the scribes and from the chief priest about the birth of the king that was supposed to be born. ये वहां पर न्यायी लोग थे, वो लोगों ने डिक्लेयर किया, बताया बाइबल के अंदर कि ऐसा व्यक्ति जन्म लेने So वाला at है। that time, the judges, like the scribes and the chief priests, whoever was there, they acknowledged, they declared that this king is going to be born in Bethlehem. इसके लिए हम देखते हैं पहला डिक्लेरेशन चरवा से आया, दूसरा डिक्लेरेशन याजक से आया, अब तीसरा डिक्लेयर से न्याय लोगों से आ So रहा है। firstly, the shepherds acknowledged, and secondly, the priest acknowledged, and thirdly, the judges also acknowledged. इसके लिए आज हम लोग जितने भी लोग हैं, हम न्याय की तरह प्रभु को डिक्लेयर, हम लोग सही न्याय करना बहुत जरूरी है। And therefore, today we also need to judge or discern in the rightful manner. इसके लिए हम देखते हैं जब एली ने सही न्याय नहीं किया, Also, as we see, Eli the priest did not discern or judge in the rightful manner. क्योंकि एली के पास 3 अनॉइंटिंग थे। He had 3 anointings over him. शेपर्ड का, चरवा का अनॉइंटिंग था, He had the anointing of the shepherd, याजक का अनॉइंटिंग था, and the anointing of the priest, और न्याय का भी अनॉइंटिंग था। and also he received the anointing of the judge. लेकिन ये तीनों अनॉइंटिंग वो फेल हो चुका था। But he failed in his anointing. उसने शुरुआत तो अच्छी की, He began, his beginning was good, लेकिन उसके बच्चों की वजह से वो फेल हो चुका। but because of his sons, he failed. अभी हम देखते हैं न्याय के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नबी लोगों को चुनता है। Now, after the judges, God chose prophets to serve and to rule over his people. हम देखते हैं जैसे एली ने प्रार्थना की हन्ना के ऊपर, And we see as Eli the priest prayed over Hannah, तो हन्ना जो अनॉइंटिंग उसके पास था, अभी वो अनॉइंटिंग हन्ना के ऊपर जा रहा है। now when he prayed over Hannah, the anointing which was upon him, now he anoints Hannah with that same anointing. और हम देखते हैं कि हन्ना के जो बच्चा है, जो सैमुएल, उसको वो 3 अनॉइंटिंग से आशीष होता है। And when this anointing was transferred into Hannah, the son whom she conceived, Samuel, also got these 3 anointings over him. एक चरवा का, One was of the shepherd, याजक का, the priestly anointing, और यहाँ पे न्याय का। and the judge's anointing. और इसके लिए हम देखते हैं जब हन्ना के पेट में अंदर जो बच्चा था सैमुएल, और वो था एक नबी। हालेलुया। And we see even as these anointings came over Samuel, but Samuel was chosen as a prophet. और हम देखते हैं अभी सैमुएल के पास 4 अनॉइंटिंग है। Now this Samuel had 4 anointings over him. चरवा है, The shepherd anointing, हम देखते हैं याजक है, the priestly anointing, हम यहाँ पर और देखते हैं कि न्याय है,
the judge's और anointing, एक नबी का। and then fourth was the anointing of the prophet. इसके लिए परमेश्वर कहता है मैंने आपको माँ के कोख से चुना है कि आप एक नबी हो करके। And that's why God's word mentions that I have chosen you from your mother's womb to be a prophet. इसके लिए आज हम लोग सभी जन, बाइबल कहती है एक दूसरे को भविष्यवाणी के रूप में बातचीत करो। And therefore today, even as the Bible mentioned, we need to speak to one another as though we are prophesying over them. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And prophecies are really very important. इसके लिए आज जब भी भविष्यवाणी करते हो And so when you prophesy, तो परमेश्वर का एक प्रार्थना भी एक भविष्यवाणी है प्रिय। so even a prayer is a prophecy. आज अभी जो रेवरेंड फादर रॉबिन ने जो प्रार्थना की, चाहे पास्टर थॉमस ने प्रार्थना की, और जो लोग प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना में देखो उस प्रोग्राम के लिए चाहे होने दो एक भविष्यवाणी की कि वो चीजें अच्छी हो जाए। So even as we were praying, Reverend Father Robin and Brother Thomas, you all prayed right now, and it was not just a prayer, but it was like a prophecy for that united Jerusalem. इसके लिए हम देखते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं, So whenever we pray, हम प्रार्थना नहीं करते, हम भविष्यवाणी करते so we are not only praying, but we are prophesying. हैं। जब प्रार्थना जो है एक भविष्यवाणी के रूप में है So प्रियो। prayer is like a prophecy. इसके लिए आज तुम लोग जब भी प्रार्थना करोगे एक भविष्यवाणी के रूप में प्रार्थना होनी चाहिए। And so now onwards, whenever you pray, let your prayer be like a prophecy. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने आपको महान चीजों के लिए बुलाया गया है। And therefore today God has called you for greater things. इसके लिए यहाँ पर देखते हैं जब भी एली ने प्रार्थना किया तब एली यहाँ पर वो अपने ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर हो रहा था किसके अंदर, सैमुएल के अंदर। So here when Eli was praying over Hannah, the blessings were getting transformed from him to Samuel. इसके लिए आज हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सैमुएल के अंदर वो सारी खूबियां थी। And therefore we see all these things which were there, the anointings were in Samuel. इसके लिए सैमुएल एक हम कैपराइम के गोत्र का व्यक्ति होने के बाद भी वो याजक लोगों के साथ जिया। And we see Samuel being a descendant from the tribe of Ephraim, he still lived with the people of Israel. नहीं, याजक लोगों के He साथ जिया। lived among the priests. उसने बलिदान दिए He offered sacrifices, और हम देखते हैं उसके सारे न्याय किया and he also judged Israel, और उसने अच्छा तरीके से लोगों को चलाया। and he also led the people very beautifully in the fear of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the मेरी Lord. बातों को आप समझ रहे हो, अब मैं विश्वास करता I हूँ। believe you are able to understand. Amen, and, amen, what I'm brother. saying. Amen, Pastor. यस, हम देख रहे हैं पहला यीशु को चरवा लोगों ने डिक्लेयर किया। So firstly we saw the shepherds acknowledge Jesus, याजक शिमोन ने इसको डिक्लेयर किया। and the priest, that is Simeon, acknowledged Jesus. हेरोड राजा के टाइम पे जो भी यहूदी लोग थे वहां पर उन लोगों ने बताया हेरोड राजा को कि मसीहा पैदा होने वाला है, वो बेथलेहम से होने वाला है करके उन लोगों ने डिक्लेयर किया। And we also see the Jews and the wise men who went over there and they acknowledged about Jesus's birth in Bethlehem. अभी जॉन द बैप्टिस्ट पानी के अंदर खड़ा रह के कहता है कि यही है मेमना जगत का पाप को उठाने वाला। अभी यहाँ पे नबी भी डिक्लेयर कर रहा है। And now in the New Testament we see that even John the Baptist, he was a prophet, and he also acknowledges Jesus is the Lamb and the Son of God. इसके लिए हम देखते हैं चरवा, याजक, न्याय और नबी तक हम पहुंचते हैं, चार चीज। And so even we, when we are anointed, we can get the anointing right from shepherd, priest, judge, and a prophet. इसके लिए आज हम लोगों को परमेश्वर उन चीजों से भर रहा है। And so God is filling us with these anointings. इसके लिए आज हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, And therefore today we are not ordinary people. क्योंकि यीशु के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा ये सारी चीजें हम लोग के अंदर एक डिपॉजिट की तरह आई। Because all of this we have received because of the grace of God. इसके लिए हम देखते हैं जैसे एली के द्वारा ट्रांसफॉर्म होकर सैमुएल के अंदर वो जो ब्लेसिंग जा सकती है। So if the anointing or the blessing from Eli can be transferred into Samuel through Hannah, और उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि सैमुएल के द्वारा किसके अंदर कौन सी चीजें गई। and then now we will see from Samuel how this anointing gets transferred to in some other person. इसके लिए हम देखते हैं जब एलाइजा ने प्रार्थना किया एलीशा के ऊपर, So when Elijah prayed upon Elisha, तो उसको दुगना मिला। he received a double portion. हम देखते हैं प्रॉफिट लोगों दुगना मिलता है। You see, the prophetic anointing is transferred at that time.
it is a double portion or a double anointing is transferred. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप प्रार्थना करते हो, prophetic prayer होता है, तभी डबल पोर्शन का आपको वहां पर ब्लेसिंग देखने को मिलेगा. So when you pray prophetically, you will be able to see a double portion of इसलिए anointing. वहां पर सुपरनैचुरल होते हैं. And at that moment, you get to see supernatural things happening. इसके लिए हम देखते हैं तो पेंटिकॉस्ट जो है वो चौथा फीस्ट है. And even as we see the fourth feast of God is the feast of Pentecost. इसके लिए हम देखते हैं डबल पोर्शन जूस और जेंटाइल्स के ऊपर, ये दोनों पवित्र आत्मा दोनों के ऊपर आ गया. And so we see the Holy Spirit descended upon the Jews and the Gentiles on the day of Pentecost. हम देव और पेंटिकॉस्ट वहां पे सिर्फ जूस थे, लेकिन आने वाले दिनों में वो दोनों के ऊपर आ गया. But at the time of the Pentecost, there were only Jews gathered. But in the coming days, we see that the Holy Spirit came upon the Gentiles as well. इसके लिए हम देखते हैं जो डबल पोर्शन, जब भी चौथी चीज आती है तभी डबल पोर्शन आते हैं. So when the fourth thing comes, at that time we see a double portion. यीशु मसीह भी 4000 साल जब भी आदम से लेके यीशु मसीह आया, इसके लिए हम लोगों को डबल पोर्शंस लेके आया. So right from the time of Adam till the time of Jesus, we see 4,000 years. We see Jesus brought us double blessings. इसके लिए हम वहां पर कभी भी देखते हैं सभी डबल पोर्शन होना बहुत जरूरी है. And so double portion is very important in our lives. इसके लिए हम जब भी देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी का जो एनॉइंटिंग कैरी कर रहे हैं वो किसी ना किसी यीशु के द्वारा हम लोगों के ऊपर आ गया है. So even as the anointing is important for us, we see this we have received through Jesus. और हम यहाँ पर देखते हैं अभी सैमुएल के पास 4 एनॉइंटिंग है. And now Samuel has 4 anointing: शेपर्ड का, shepherd anointing, प्रीस्ट, priestly anointing, न्याय का judges anointing, और नबी का. and the prophetic anointing. जब भी वो दाऊद के ऊपर तेल डाल रहा है, Now when Samuel is anointing David, अब वो राजा बनने के लिए उसको एनॉइंटिंग कर रहा है. he's anointing David to become the king. लेकिन वो राजा के साथ उसको 4 एनॉइंटिंग मिल रहे हैं दाऊद को. So David, when he's getting the kingly anointing, along with that he is receiving other 4 anointings. इसके लिए वो चरवा है. So even David is a shepherd. हम देखते हैं एक याजक भी है, He's also a priest. क्योंकि उसने याजक की रोटी खाई जाकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ. Because when David went and he ate the bread from the tabernacle of God, we see nothing happened to him. वो अच्छा न्यायी है, David was a good judge as well. और एक नबी भी है, उसने बहुत सारी भविष्यवाणी की है. And David was a prophet as well, because he has prophesied so many things in the Psalms. साम्स में लगभग 26 उसने भविष्यवाणी की In है the book of Psalms, we get to read 26 such prophecies that he has made यीशु के बारे में. about Jesus. और हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं वो एक राजा है. And also, finally, the 5th anointing over him was the kingly anointing. इसके लिए यीशु कहता है तुम लोग याजक की प्रजा हो And that's why God tells us that we are a kingdom of priests और राजा भी की. and kings as well. हालेलुया. Hallelujah. मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो वहां पर एक 5 डिपॉजिट था, वो आज हम लोग के अंदर राज कर रहा है. So today we get to know that the 5 deposits of anointing which were in the Old Testament, we received those same anointing. इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग के अंदर यीशु के द्वारा ये 5 चीजें रहती हैं. So today, because of Jesus, we get all these 5 anointings in our life. इसके लिए यीशु कहता है मैं एक अच्छा चरवा हूँ. And that's why Jesus tells, I am a good shepherd. इसके लिए उसने पहला चीज कर लिया. And therefore he did the first thing. और सेकंड थिंग कहता है मैं एक महायाजक हूँ. And then secondly, Jesus says, I am the high priest. इसके लिए वो आज वो स्वर्ग के मंदिर में एक महायाजक की तरह वहां पर है. And today Jesus is in the heavenly temple and he is like a high priest interceding for us. और वो कहता है मैं एक नबी हूँ. And then Jesus says, I am a prophet. इसके लिए बहुत लोगों ने उसको न्यू टेस्टामेंट में कहा ये तो एक नबी है And करके. that's why many people in the New Testament acknowledge Jesus as a prophet. और हम देखते हैं मैं एक न्यायी हूँ. And Jesus says, I am the judge. उसको बोलता है वो आएगा इस संसार के ऊपर न्याय करने वाला And we है. see when Jesus will come on the earth, in his second coming, he's going to come and judge the nations. और एक आखिरी का है वो है राजा. And the final anointing and what Jesus is the king. और वो राज करने के लिए गद्दी के ऊपर बैठने वाला है. And Jesus is going to come and rule over the whole world. And he's going to sit on the throne of David. हालेलुया. Hallelujah. मैंने बातों को देखो, अगर आप यीशु को स्वीकार करते हो So if you receive Jesus, तो ये 5 चीज यीशु के अंदर है. so all these 5 things, 5 anointings which are in Jesus, और वो जब भी हम लोग अंदर आते हैं and when these same anointings come inside our lives, वो मैनिफेस्ट होने को शुरुआत होती है. and then it starts to manifest in our life. लेकिन हम लोग आज इस संसार की चीजों के अंदर ही बने हुए हैं. But if today we are only bound by the worldly things and surrounded by the worldly things,
तो इसके लिए आज हम लोग का जो फोकस है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। And therefore, our focus is somewhere not going in the right direction. इसके लिए यीशु भी आया तभी उसने किसका पिता के पास उसने कहा मेरा पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ। And that's why also when Jesus was in the world, he said that I do what my Father says. मैं एक सिंपल चीज बताना चाहता I हूँ। want to tell you a simple thing. पतरस के साथ यीशु था, Jesus was there with Peter, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। but still Peter was lying. हम देखते 3 बार उसने झूठ बोला। We see Peter lied thrice. पतरस के साथ यीशु था, Jesus was with Peter, लेकिन प्रभु ने कहा मुझको प्रार्थना कर, and Jesus told him to pray. लेकिन वो लोग प्रार्थना कर नहीं But पाए। at the same time, they were not able to pray क्यों? क्योंकि यीशु है लेकिन प्रार्थना कर नहीं सकता। because Jesus was still there with them, but still they were not able to pray. आज बहुत सारे लोगों के पास यीशु है Today, many of the people, Christians, have Jesus with them, लेकिन प्रार्थना कर नहीं सकते हैं। but they are not able to pray. वो लोग हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो लोग पत्र झूठ बोलते हैं, And they have Jesus with them, but they still lie. और हम देखते हैं पतरस के साथ यीशु था लेकिन उसने मालकुस का कान काटा। And then also we see Jesus was there with Peter, but at the same time, when he got angry, Peter cut the ear of Malchus, the soldier. हम देखते हैं जितने बहुत लोगों के पास यीशु है लेकिन आज फाइटिंग भी करते हैं। So many people have Jesus in their lives, but still they want to fight. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हम देखते हैं पतरस के पास यीशु है, डर के मारे उसने ना बोला। So Peter had Jesus with him, but at the same time he had that fear, and therefore because of the fear he betrayed Jesus. और हम देखते हैं आज हम लोग के पास यीशु है लेकिन आज हम लोग कभी-कभी ना बोल जाते हैं। And today also we have Jesus with us, but many times we deny him. क्या प्रॉब्लम है आज हम लोग? Today, what is the problem within us? हम लोग कोई ये नहीं कि हम सबके पास यीशु है, Today we all have Jesus with us. लेकिन जब वही पतरस जब भी पेंतिकोस्त के दिन में खड़ा रहा, जब भी पवित्र आत्मा आया, वो पतरस किसी को डरा नहीं, उसके बाद उसका लाइफ बराबर चेंज हो गया। The same Peter who feared and did all these things on the day of Pentecost, he was totally transformed. He was not at all fearful, and he was completely transformed after receiving the Holy Spirit. क्यों? Why? क्योंकि यीशु के साथ हमको आत्मा भी होना बहुत जरूरी है। Because after having Jesus in our lives, we also need the Spirit of God in our life, that is the Holy Spirit. नहीं तो हम वही पतरस के साथ देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन आत्मा का कार्य नहीं होगा। Because then if we don't have the Holy Spirit, still we will be with Jesus, we'll do all the other things, but then the work of the Spirit will not happen. हम देखते हैं पतरस को कोई प्रार्थना करने के लिए वहां पर वो 3 बजे दोपहर के 3 बजे जाकर प्रार्थना करता है, मतलब परमेश्वर जो आत्मा है उसको लीड करता है प्रार्थना करने So के when लिए। we see Peter was praying at 3 o'clock, the Spirit of God led Peter to pray. देखो यहाँ पर देखते हैं कि आज वही पतरस प्रभु यीशु कह रहा था उसको प्रार्थना कर करके, And the same Peter, when Jesus was telling him to pray, he couldn't pray. लेकिन आज वैसे ही हो रहा है कि बहुत टाइम लोगों के पास प्रार्थना क्यों कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास आत्मा नहीं है। And that is why today many people are not able to pray, because they don't have the Holy Spirit with them. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके लिए बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 8 वचन 13, अगर तू शरीर से जिएगा तू मरेगा। And that's why Romans 8 chapter 8 verse 13 says, if you live by flesh you will die, लेकिन आत्मा से जिएगा तो जीवित कहलाएगा। but if you walk and live by the Spirit, then you will live. और इसके लिए हम कहते हैं, हम बाइबल कहते हैं हम आपा पिता करके पुकार जाए। And then because of the Holy Spirit we are able to call him as Abba Father. इसके लिए हम देखते हैं जब दाऊद की Anointing came upon David. दाऊद जंगल में नहीं रहा, David was no longer in the forest. क्योंकि बाइबल कहती है जब ये anointing आता है आप नीचे नहीं जाते हो, आप ऊपर जाते हो। So when the anointing comes, you do not go back, but you go upwards. हालेलुया। Hallelujah. Can you can hear? Hello. You can hear Yes, now? yes, very clear. Hello. Yes, Yeah, yes, yeah. very cleler. Thank you. Very हम clear. देखते हैं दाऊद के ऊपर जब anointing आया, दाऊद को 3 जगह पे anoint किया। मैं 2 मिनट में एंड कर रहा हूँ। So when David was anointed, he was anointed at two different places. 3 3 different places. पहला उसको सैमुएल ने अभिषेक किया, So first David was anointed by Samuel. जुदा के लोगों ने anoint किया, Then the people of Judah anointed him. भाई पूरे इजराइल लोगों ने anoint And किया। also the entire Israel anointed him as king. इसके लिए पहला जो था वो 30 गुना, दूसरा था वो 60 गुना, लास्ट था वो 100 गुना। So firstly, when Samuel anointed him, it was 30%. It was 60%, and when the people of Israel anointed David, it was 100%. मेरे को आज भी मुझे और आपको परमेश्वर ने उसी anointing से बुलाया गया। And today, for you and me,
God is in that same anointing. और हम 30 गुना से 60 गुना 60 गुना से 100 गुना तक जाना बहुत जरूरी And है। therefore, for us to go from 30% to 60%, from 60% to 100% of anointing is very important. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, I want to tell you something very important. हम over सभी here. लोगों को We all, प्रभु ने चुना है, God has chosen all of us. लेकिन हमें उन ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं, वो ब्लेसिंग को हमको यहाँ पर देखना है। प्रभु But we all need to see those blessing and the anointing in over here. प्रभु उस सिंहासन पे बैठा है God is sitting on the throne, और वो वहां पर चमत्कार चमत्कार खेलना चाहता है हम लोग के साथ, and God wants to do miracles in our lives. क्योंकि वहां पर वो हम लोग स्वर्ग में जाकर नहीं बोल सकते मेरिकल होने दो करके। We cannot go to heaven and then desire or pray for miracles. आज हम लोग को जो डिजायर कर रहा है वो धरती के ऊपर करना है। So today, when we desire for miracles, we have to desire for in this world when we are living here. हमको चंगाई चाहिए, हम धरती के ऊपर चाहिए। So the healings that we need are required in the world. जब एक बार हम स्वर्गीय चीजों में जाएंगे, हम उस ब्लेसिंग्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। So once we enter heaven, we have already entered the blessings in heaven. That therefore we will not need all of this. इसके लिए हमको डबल पोर्शन की आशीष चाहिए। And therefore we need a double portion. मुझे धरती के ऊपर भी आशीष So we need blessings on the earth और हम स्वर्गीय चीजों के and ऊपर। also blessings in the heaven. अगर मैं चरवा का काम अभी अच्छा से कर रहा हूँ, If I am fulfilling the duty of being a good shepherd on this earth, मतलब मैं एक सुसमाचार अच्छा दे रहा हूँ, it means that I am sharing the gospel in a good way. और इसके लिए हम जब हम आराधना अच्छा कर रहे हैं, So when we are worshiping well, मतलब हम लोग याजक का काम अच्छा कर रहे हैं, so when we worship in the right manner, that means we are a perfect priest before God. हम न्याय का काम अच्छा कर रहे हैं, So if we are discerning and judging in the rightful manner, तो हम लोग किसी को करेक्शन अच्छा कर रहे हैं, so which means we are rebuking or correcting a person who is requiring correction. और हम देखते हैं जब भी हम लोग नबी का काम अच्छा कर रहे हैं, तो And फिर so when we do our duty of a prophet in a right manner, नबी क्या करता था? वो लोगों की दिशाओं को प्रभु की ओर लेके आता था। what would a prophet do? He would turn the ways of people's heart towards God. जब भी कोई प्रभु का बातें नहीं सुनता है, तभी परमेश्वर नबी का बात करने को शुरुआत करता है। And we see in the Old Testament when people were rebelling against God, God would use a prophet to go and speak to them and to guide them and to warn them. अरे आज के प्रॉफिट लोग सिर्फ प्रॉफिट करने में हैं। And today, in today's world, we see the prophets are just making profits, लेकिन जो परमेश्वर का जो काम है वो नहीं हो रहा है। but the work of God is not happening. आज कोई भी कौन सा भी व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी आज ये कोरोना का जो व्यक्ति जो चीजें हुई, हम सारे जितने भी है, हम सब लोग फेलियर के इसमें हम गिने जाते हैं, फेलियर में। So even as we see all the problems that came, the pandemic and everything, we are counted like a failure. बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to tell you, परमेश्वर बातें करता है, God speaks to us. लेकिन परमेश्वर किन लोगों से बातें करता है? जो उसके हृदय को ढूंढता है। God speaks to people who seek Him. आपके पास मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अकेले व्यक्ति हो, Today I want to tell you, if you are the only person, और आप एक एम्प्टी वेसल की तरह हो, and if you are like the empty vessel, और प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझसे बातें कर, and if you are saying, God, speak to me, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे बातें करने को शुरुआत हो कर। and then God will start speaking to you. मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या है, कितना आपने प्रार्थना किया, कितनी अपनी चीजों को किया, वो नहीं देखेगा। अगर आप अपने खाली बर्तन के समान आप अपने प्रभु के पास बैठे हो, मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर बातचीत करने को शुरुआत He करेगा। will not see what you have done or what all things you are doing, but He wants you allow Him and you give Him the time, then definitely God is going to speak to you. प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रियो, I want to tell you, ये 5 anointing आपके लोगों के ऊपर है। these 5 anointings are upon you. चरवा, Shepherd's anointing. इसके लिए वो कहता है, मैं मुख्य चरवा जब आएगा, तुम लोग भी वहां पर मौजूद And रहोगे। Jesus says that I'm the chief shepherd, and when the chief shepherd will appear, you too are going to appear with him. इसके लिए याजक, And therefore the second anointing is a priestly anointing. इसके लिए कहता है, तुम लोग याजक की प्रजा हो और मैं तुम्हें याजक की प्रजा कहलाऊंगा। And that's why we are called as the royal priesthood and we are holy nation unto our God. तुम लोग एक न्यायी हो, You are a judge. एक प्रभु के साथ बैठकर तुम लोग न्याय करने वाले You हो। are going to sit along with Jesus and judge. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तीसरा है नबी, चौथा है नबी,
And the fourth anointing is the prophetic anointing. और आज आप किसी न किसी को प्रार्थना के द्वारा, एक भविष्यवाणी के द्वारा आप किसी न किसी को आशीष कर रहे हो। And today you are praying and prophesying over other people like a prophet. अब जैसे थॉमस ब्रदर ने जेरूशलेम के लिए प्रार्थना किया, And as Brother Thomas prayed over Jerusalem, उसके लिए वो प्रार्थना रहेगी, for Brother Thomas it may be a prayer, लेकिन परमेश्वर के लिए एक भविष्यवाणी है, but before God it is like a prophecy, क्योंकि उसने वो डिक्लेयर किया कि शांति होने के लिए। because he declared or he decreed that let there be peace. हालेलुया। Hallelujah. और तुम लोग एक राजा हो, And you are a king. और तुम लोग ये परमेश्वर के न्याय, एक राजमान की तरह, उसके राजा की तरह तुम लोग रहने वाले हो। And you will be like kings in his kingdom. और ये पांचों चीज आज हम लोग की आशा होनी चाहिए कि हम वो चीजों को देख सके। And also you need to desire all these 5 things in your life so that you may be able to see it being manifested. जो 5 थी वो लोग फेलियर हो गए, We see the 5 different positions, they all saw failures in their lives. हम देखते पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में फेलियर्स दिखा रहे हैं वहां In the पर। Old Testament, when we read the Bible, we see the failures in the lives of these people. इसके लिए यीशु ने आज हमको उसके आत्मा के द्वारा ये पांचों चीज हम लोग को दिया है कि हम उसमें पास हो जाए। But in the New Testament, we see Jesus through his Holy Spirit has given us through his grace these 5 anointings so that we may see success and prosperity in these हम areas. शारीरिक रीति से नहीं, मैं कह रहा हूँ आत्मिक रीति से। I'm not telling you physically, but I'm talking about in the spiritual realm. इसलिए पांचों चीज आज हम लोग के अंदर डिपॉजिट है, And today, all these 5 anointings are deposited inside of us. और परमेश्वर ने आप लोगों को अभिषेक किया And है। God has anointed all of you. आपके परिवार को, आपको परमेश्वर नीचे नहीं लेके जाएगा, आपको ऊपर लेके And जाएगा। God will take all of you and your family upwards and not downwards. बिकॉज परमेश्वर जहां पर उसकी हम स्तुति करते हैं, हम नीचे की तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम अपने हाथ उठाकर ऊपर की तरफ करते So हैं। even when we worship God, we do not look down and worship, we look up into the heavens and we worship our God. धन्यवाद हो, आज टेम्पल नहीं है, And we need to thank God that good that there is no temple on this earth. नहीं तो हम लोग को जेरूशलेम को देखकर प्रार्थना करना पड़ता था। Else we would have to face Jerusalem and pray our prayers. हम लोग का जो टेम्पल है वो स्वर्गीय है और है। Today our temple is in heaven. इसके लिए हम लोग अपने दोनों हाथ उठाते हैं और ऊपर की तरफ And देखते हैं। therefore we lift both our hands and then we pray and worship God. इसके लिए हम देखते हैं निकोडेमस और समरिया, And therefore समरिया स्त्री। we see about these 2 characters. One is Nicodemus and the other one is this Samaritan woman. जॉन चैप्टर 3 में समरिया के, सॉरी, निकोडेमस के कहाँ है? In John chapter 3, Nicodemus said, और हम देखते हैं जॉन चैप्टर 4 में समरिया के बारे में लिखा है। and John chapter 4, it is mentioned about the Samaritan woman. एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, Nicodemus was a learned and a very great man, एक भाई बेचारी स्त्री थी। and the Samaritan woman was an adulterous woman. ये दोनों जन अकेले अकेले मिलने के लिए आए यीशु को। And both these characters, they came to meet Jesus personally. हमने तो एक रात के समय में One of them came, Nicodemus came in the night, और एक था दोपहर के समय में। and we see the Samaritan woman came during the afternoon. निकोडेमस ने सिर्फ नॉलेज ले लिया। And when Nicodemus came to Jesus, he only to gain the knowledge from Jesus. आज बहुत सारे निकोडेमस है, Today there are many Nicodemus. सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं, They are only gaining knowledge, वो नॉलेज लेके बैठ रहे हैं। and they are only taking knowledge and sitting where they are. लेकिन समरिया की तरह हम लोगों को अभी बर्तन को फेंक कर भागना पड़ना है, जाना है। But we need to become like that Samaritan woman. When she heard and she came to know about Jesus, she threw her water pot, and she ran to share the gospel that is about Jesus to the village. 2020 हम लोगों के लिए निकोडेमस के लिए रहा। So 2020 was like a year where we all were like Nicodemus. और हम लोग ने सुन रहे थे यूट्यूब से, अलग अलग गूगल मीट, जूम से, सब जन से। So we all were listening to the word of God through Zoom, through Facebook, and through various other mediums about the word of God. We gained knowledge. लेकिन 2021 हम लोग के लिए समरिया की तरह होने वाला है। But 2021 is going to be like that Samaritan woman. और हम लोग चिल्ला कर जाने वाले हैं And we are going to shout and we're going to go and share the gospel. और पूरा ये साल फैलने वाला है प्रभु And का this वचन। whole year God's word is going to spread across the whole world. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, Lord, we thank you. प्रभु सभी लोग जो सुन रहे हैं, All of the people, Lord, Father, all our brothers and sisters who are listening right now. रेवरेंड पास्टर्स, लीडर्स, जो भी कलीसिया के लोग हैं, Lord, we pray for all the reverends, pastors, leaders, and the people of the church. ये पांचों anointing उन लोगों के अंदर डिपॉजिट है प्रभु। Lord, we believe all these 5 anointings are deposited in them. प्रभु ये मैनिफेस्ट हो जाए। Lord, we pray that these anointing and their position, Father, and their giftings would be manifested in their lives. और प्रभु इन दिनों में वो एक्सपीरियंस कर सके यीशु मसीह And के Lord, नाम we से। pray that they would experience personally in their lives. और मैं
विश्वास करता हूँ ये समय है उसको वो एक्सपीरियंस करने And का। Lord, I believe that now is the time for them to experience your anointing. मैं प्रार्थना करता हूँ इसी क्षण प्रभु सभी लोगों को आपका अनुग्रह मिले। And Lord, I pray right now at this very moment, let their Lord, you pour out your grace upon them. ये वचन प्रभु लोगों के जीवन के अंदर बातचीत करने दो। Lord, let your word speak to every person's heart, Lord, at this moment. आज किसी को सोते टाइम पे आप बात करने वाले हो इस वचन के Tonight, द्वारा। Lord, when they go to their bed, oh God, you're going to speak to them through dreams and visions. आपके दर्शनों के द्वारा बात करने Through वाले हो। your dreams and visions, you're going to speak to them. वो इस समय पे महसूस हो रहा है उसके लाइफ के अंदर वो आशा कर रहा है बड़े बड़े रेवलेशंस को लेने के लिए प्रभु। Lord, there are some people who are desiring to receive divine revelations from the Lord. प्रभु लोगों के जीवन के अंदर कार्य होने And दो। Lord, let your great works be done in their lives. यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। This is my prayer, Lord. प्रभु लोगों को सभी लोगों को आशीष कर Lord, you bless everyone. यीशु नाम के नाम In the से। name of Jesus, we pray. आमीन। Amen. 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 Unbelievable. What a anointing, what a revelation, brother. I was trying to search for the names of those guys who were in the similar anointing. One of them, his name is John Paul Jackson. And another gentleman, I can't remember his name. I've been hearing them are you listening to me, brother? Yes. Yes, very clear. One is John Paul Jackson, who was trying to tell us about the stars and the signs. Yes. And another one, he was an archaeologist. I'm not getting his name, old man. I used to follow them and I used to try to learn many things. And I was so impressed, but I did not know we have a prophet in our backyard. Our homegrown person, I have never heard. I am almost turning more than 50 years, but in my so many years, I have not to exalt you. I have never heard this revelation, the 5 blessings. And there's another gentleman Praise God. in Korea who is known as Abraham Park, Dr. Abraham Park. I don't know whether you have heard about him. And this revelation is great, brother. And I really appreciate you. Thanks for being here today. It is not for the, like it is not, you have strike the right chord and you have given us so much homework today to identify the 5 blessings. And I think we got to really take this to the next level because this type of revelation, unbelievable. As I told you, we go after John Paul Jackson, we go after Abraham Park, we go after so many people. But thank you for being with us, and may God take you to the next level. This is really beneficial. I will not talk more since we have a constraint of time. We have Father. We have Father. We had a father here, another father. I think he has got out. Father Robin, and we had another father. So we have Dr. Shakti with us. Dr. Shakti, can you hear us? Dr. Shakti, can you hear us? एक छोटी नहीं, एक आखिरी प्रार्थना भाई ने की है, लेकिन एक प्रार्थना हम लोगों के लिए कर दीजिए कि ये जो बीज जो भाई ने बोई है, अच्छी भूमि, जो हम लोग अच्छी भूमि है, हमारे में फलदायक हो और हमारे में ये फल दिखे, ब्रदर। डॉक्टर शक्ति, प्रार्थना करिए। यस, ठीक, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित, सामर्थी, अत्यंत ही दयालु, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु जी एक बार फिर से हम एक मन एक चित्त होकर आपके सिंहासन के सन्मुख आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोला। प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा जो प्रकाशन भाई के द्वारा दिया गया प्रभु जी, होने दे पिता कि बहुत सी आशीष सुनने समझने में आने पाए प्रभु जी, और आने वाले जीवन में प्रभु जी हम सब एक नए बीज के पौधे के रूप में तैयार हो सके प्रभु जी, जो कई गुना फल लाने वाला हो प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, कि इस महामारी के समय भी प्रभु जी आपने हम सबों को बचा के रखा है, सुनने की योग्य रखा प्रभु जी, समझने की शक्ति दिए पिता, ताकि आपके वचनों को जान सके और होने दे पिता कि उसमें हम जीवन भर आगे बढ़ सके, और वो मंशाएं
जो आप हमारे द्वारा इस संसार में हमसे जो चाहते हैं प्रभु जी हम पूरा कर सके। हमारे साथ सहभागी हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वापस जाते हैं प्रत्येक को तू बहुतायत की आशीष प्रदान कर पिता, और बुद्धि दे प्रभु जी कि आने वाले समय में पिता हम हर एक बातों को जो तेरी गूढ़ बातें हैं तेरे वचनों से प्रभु जी हम समझ सके, जान सके और उसमें चल सके पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता स्वामी राजा प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के सामर्थी मधुर और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. Amen and Amen. amen and amen. Our all of us will on our videos and will say bye bye to each other. We would like to see everyone. Thank you. We would like Thank to you. see Amen. everyone. Thank Hey, Thank you, brother. Pastor Thank you, Wilson. Pastor Thank you, Mario. Sister Thank you, Maria. Pastor Mario, for encouraging us. Thank you. First, Thank you, Thank you, Dr. Brother Chandra. Thomas. first, Thank you, Sister Thank you, Maria, Reverend it is great. Thank you.